Well, it's a grand launch, and I thank the entire IIT E-Summit team and also students here, the professors, and the eminent personalities, all the speakers, and all the guests. Those have come here in this event to grace us. It was a great launch because VidyaAI is not only a tool. VidyaAI is basically uh, here for transforming our education system. So VidyaAI, I don't consider it as a AI tool. I consider it as a platform that can completely transform our education system in India and also later on across the globe. So I'm so happy that so many people have come to grace us in this event. So many speakers, great speakers, they have shared their thoughts, ideas on how AI can transform education because this is an area which is, I think, untouched. So untouched by AI because I don't see many applications of AI in education, wherein we actually require a lot of applications that should come in this area. This is a huge area, and there are a lot of opportunities and possibilities wherein AI can come and do automation, do a lot of personalization and adaptive. So Vidya AI is basically a personalized and adaptive learning platform. So what I see is I think Vidya AI is going to set the next journey of AI in education in India on the personalized learning and adaptive learning mainly. Because personalized learning or smart learning is very, very important because until and unless you don't know what is going to be your path for learning any skill, because nowadays the skills are much more important than any traditional education. Of course, traditional education and degrees are important, but industries are mostly focusing on like the skills, right? And Vidya AI is a tool wherein actually you can learn your skills, you can practice your skills, and you can become a master and you can become industry ready for your jobs and all those things. So I thank everybody, including the media personalities that have come. You guys have come to bless us in this occasion. I'm so happy because it was a great launch and such a beautiful platform in IIT Bombay. It is Summit. Thank you so much. तो इस समिट में क्या फायदा होगा स्टूडेंट को या फिर टीचर्स को इस वीजा ईआई से? तो विद्या एआई जो पर्सनलाइज लर्निंग एंड एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये स्टूडेंट के लिए है। तो इसका जो मेन बेनिफिशियरी है और स्टेक होल्डर है वो है स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स प्रोफेसर्स, टीचर्स भी है और आप जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग भी हैं, पर मेनली इट इज बिल्ड फॉर एजुकेशन। तो स्टूडेंट को ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। पहला बात तो उनका खुद का लैंग्वेज में वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। सो इट इज़ मल्टी लैंग्वेज। आप लोग 92 लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं जिसमें कि इंडिया का सब लैंग्वेज इसमें इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ और क्या है कि विद्या एआई में स्टूडेंट को हेल्प करता है। वो अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझने में स्ट्रगल कर रहा है, तो विद्या एआई उसको तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स, कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट का जो डिस्क्रिप्शन ऐसा ला के देता है क्योंकि वो बहुत ही गेमिफाइड वे में, ओके, इन ए वेरी गेमिफाइड वे में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकता है कि इसको ये है। तो ये एक लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है जिधर कि हम लोग अभी पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड क्या बोल रहा है कि लर्निंग हमारा स्किल बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। तो विद्या एक ऐसा टूल है जो कि स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए स्टूडेंट को बहुत बहुत हेल्प करेगा। एंड मेरे जितना जानकारी है दुनिया में ऐसा कोई टूल नहीं है जो कि विद्या जैसा फीचर्स है, एडाप्टिव लर्निंग का, पर्सनलाइज लर्निंग का, कोई भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने का, असाइनमेंट्स का, असेसमेंट का जो मॉड्यूल्स है, दीज आर ऑल एआई पावर्ड मॉड्यूल्स एंड ये सब स्टूडेंट को बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओनली आईआईटी स्टूडेंट या सब कोई भी 1 to 15 या सबको किसको भी? ये सब स्टूडेंट्स के लिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब लोग इवन की रिसर्च में या प्रैक्टिकल जो रिसर्च है या स्किल डेवलपमेंट में है
सब में विद्या यूज कर सकते हैं। और अभी क्या है, ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, साइंस के लिए या कॉमर्स ऐसा नहीं है, ये हर एक के लिए है। ये इंजीनियरिंग के लिए है, साइंस के लिए है, ह्यूमैनिटेरियन साइंस के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, सब कुछ के लिए है। इसके अलावा और क्या कुछ कर रहे हैं? इसके अलावा आप अगर बता सकें इंडिक एआई एक एआई कंपनी है, तो हमारा फोकस ही एआई है, एआई सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स बनाना। हमारा और भी प्रोडक्ट्स सॉल्यूशंस है, जैसे कि हमारा अल्टीमेट करके एक सॉल्यूशन है जो कि जेएनएआई बेस्ड मीटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि मीटिंग मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। Then we have got another platform which is called Care Insight, which is for customer care analytics. Then VidyaAI, ये जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा सबसे बड़ा फोकस है। VidyaAI यूज फॉर पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग एंड स्मार्ट लर्निंग। तो हम लोगों के पास और भी एआई प्रोडक्ट है, बट उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो फोकस है अभी पूरा का पूरा विद्या के ऊपर है। हम लोग विद्या को बहुत मतलब पूरा इंडिया का गांव-गांव में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। तो विद्या के इस मंदिर में आईआईटी मुंबई से बड़ा मंदिर विद्या का कोई हो ही नहीं सकता। वसंत पंचमी के दिन आज हमने VidyaAI लॉन्च कर दिया और आप सब लोग आए, इतनी बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज आई, साइंटिस्ट आए, बच्चे आए। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एट IIT एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हाट my co-founder Utpal Chakraborty and the entire team has done. क्या है VidyaAI? So VidyaAI लर्निंग को कस्टमाइज कर देता है हर लर्नर के लिए। एक क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं और एक टीचर ने पढ़ाया, उस कॉन्टेक्स्ट में जो टीचर ने पढ़ाया उस कॉन्टेक्स्ट में VidyaAI आपकी लर्निंग को पर्सनलाइज कर देता है, अडेप्ट कर देता है, वन ऑन वन लर्निंग कर देता है VidyaAI, जो आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक टीचर ने पढ़ाया, आपकी समझ में जो आया वो सही, नहीं आया तो सही। VidyaAI उस चैलेंज को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। ये मल्टीलिंगुअल है, 92 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। ये बहुत कम कंप्यूटेशन पावर लेता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नहीं तो AI का सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट क्या है कि बहुत सारा कंप्यूटेशन पावर लेता है। VidyaAI काफ़ी कम लेता है। हमने ऐसा एल्गोरिदम इसका बनाया है। और फाइनली ये क्या करता है कि खुद ही असाइनमेंट जनरेट करता है, उसको असेस करने के तरीके बताता है, आपको स्टेप्स बताता है कि आप कैसे अपना असेसमेंट कर सकते हो। तो ये सचमुच स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए उसका एक बडी बन जाएगा और साथ में एक AI बडी होगा जो उसके लर्निंग पाथ को, लर्निंग कर्व को उसको हेल्प करेगा कि कैसे आप बेस्ट ग्रेड्स, बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट नॉलेज आप ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना कितना फायदेमंद होगा स्टूडेंट के लिए? देखिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी स्टूडेंट कहाँ स्ट्रगल करता है, चाहे अच्छा स्टूडेंट है या अच्छा मतलब कई लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कई लोग इतने ब्रिलियंट नहीं होते हैं क्लास में, हो सकता है आगे की ज़िंदगी में दूसरे हो जाए। लेकिन उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने स्पीड के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से VidyaAI के सहारे, VidyaAI के साथ वो अपना नॉलेज, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपने ग्रेड्स ये सब बेटर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। साथ के साथ टीचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि VidyaAI क्या करता है कि जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया वो तो पढ़ाया ही, ये चला जाता है बाकी और बड़ी साइट्स पे जो रिलायबल साइट्स हैं, हार्वर्ड, MIT, IIT, येल, जो बड़े लाइब्रेरीज हैं, स्कोपस, स्प्रिंगर, ऐसी लाइब्रेरी पे जाता है और वहाँ से और पढ़ाई का मटेरियल लेके आता है। और उसका मतलब ये हुआ कि जो टीचर ने पढ़ाया वो तो पढ़ाया, उसके साथ ये और एडिशनल मटेरियल ला के देता है आपको पढ़ने का। तो आपका एकदम जो बेस है, कंटेंट बेस, वो बढ़ के ग्लोबल हो जाता है। और इसका फ़ायदा टीचर को भी बहुत है, क्योंकि उनकी भी लर्निंग अगले ही क्लास में ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी। I work as a global strategy consultant, helping the startups and MSMI to escalate their business capacity
and to reach new markets, and definitely little bit of funding. विद्या AI की बात करें Fine. So I'm very happy to be here. VidyaAI is launched by my very dear friend Dr. Utpal Chakraborty, who is globally renowned as a AI scientist, and with his co-founder and again my great friend, the founder of Media Guru Sanjay Salim, and I have seen the demonstration of the product. See, the AI market is globally, yes, 2023 it was almost $5 billion already invested. And this AI education, I am talking about the AI education market, and this is growing at the rate of almost 44% every year. And Vidya AI is a kind of a game changer. What I found after seeing the demonstration, that it is basically helping to integrate between the teacher and the taught, because the teacher, how engaged he is, that can be mapped, and the taught, in which way he understands it, that can be mapped, and that way the notes and the videos and audios, everything has been customized. So that's really a very unique feature, and I think that it should reach to the grassroots level, right from the school to college to university, and that will, help the students. Because yesterday, just now, I was interacting with one student. He was telling that had it been that he came from Indore, so he was telling that had it been earlier this type of system for us, so it would have been helped us greatly in understanding complex problems. And I've seen that the record notes, even the lectures, not only the lecture is customized and translated into the languages, because they are approaching almost 92 languages they are using, but also they are offering the website references where you can get more resources and how you can use it. So that's really a brilliant thing, and I wish a lot of success to the team and with the AI. Thank you so much. Gadge. I am currently working as Director of Strategy and Growth for Ironworks, which is based out of Pune. Vidya AI is a wonderful platform for all learning students, whether they are from school, college, university, because it gives self-paced learning and customized learning. Today, you have to match to the customer's needs and students' needs and various subjects. There is a lot of pressure on students to score good marks, but given the pressure on the schools also, students find very little time, and that's why they are also traveling and wasting a lot of time in transport. With the AI, which becomes personalized learning, they can have it on their phone wherever they are. They can learn all those fundamentals and score good marks. And it is not about just scoring; it is also teaching you how to understand the concept. Understanding the basic concept fundamentals will make you utilize this in your life for other various purposes also. I congratulate the team of VidyaAI, Dr. Utpal Chakraborty and Mr. Salil. I think that this is going to transform the education space in India. Thank you. Hi, I'm Gautam. So I'm from the National University of Singapore, and also I have a startup company called Hydrogen Innovation Private Limited, where I'm the co-founder and chief technology officer. So moving forward, actually we need industry required advanced educational systems where the students will be familiar with the machine learning, Internet of Things, and also intelligence. So for that, actually, what I believe, education system also need to be upgraded. So where actually from the negative to the positive, so students can learn the real application. So the system should be adapted to learn or to provide the solution for students. And in that respect, I believe this with the AI, which they are making more personalized. Whatever the student got the problem, they can interact with this intelligent system, and then they can cut down or minimize their system learning time. Moreover, whatever the struggle they face, they can actually resolve with this struggle, minimizing the struggle time, and they can learn more advanced tools. For example, during our time, we have faced a lot of problems, not only the language problem, but technological problem. This with the AI coming in the multi-language educational system, where actually you can minimize this language problem. At the same time, they are providing the personalized scope. So whatever you want to learn, you can put and you can interact with this learning system. So overall, this product or this solution is, I will say, is not a product. It's more on the solution in the space of
education, which is really India growing very fast, looking the global requirement of the demand of high skill intelligence. India one of the prime or one of the major trust where actually we are providing lot of skill, and in that respect this Vidya AI definitely will take forward, and it will be very useful for the students, faculty, all the community of the different stakeholders working in this space. I definitely wish all the very best to the co-founder and the team who working day and night to develop this product for the benefit of the society and the benefit of the student. All the very best to Vidya AI and cheers up Vidya AI. इसके बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों को पता है कि स्वच्छ शिक्षा अभियान करके गवर्नमेंट एक मीन्स इनिशिएटिव चलाती है। सो विद्या आई उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वो रोल कैसे प्ले कर सकता है कि उसका जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतना डेप्थ नहीं है कि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड पे रिसर्च कर पाए। सो विद्या एआई के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ द हमारा एजुकेशन है, पर हमारे यहाँ एक चैलेंजेस ये भी आता है कि हर एक रीजन में एक ही क्लास में डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के स्टूडेंट मिलते हैं। तो विद्या एआई क्या कर सकता है, विद्या एआई उन बच्चों के हिसाब से कंटेंट को डिज़ाइन कर सकता है, उनको उस लेवल से नॉलेज दे सकता है जिस लेवल से उनको फाउंडेशनल लेवल से नॉलेज चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चों का अगर देखा जाए तो आईक्यू पावर मीन्स अलग अलग तरीके से होता है। तो विद्या एआई उसमें क्या कर सकता है, उसको स्क्रॉल कर सकता है उस चीज़ों को, फिर जिसको जिस लेवल पे पर्सनलाइज लर्निंग करवाना है उसे लेवल से उसको स्किल को डेवलप कर सकता है, जिससे ये होगा कि कंट्री में जो हमारा रिसर्च और R&D पावर है वो एक सीमित दायरे तक नहीं रहेगा, वो काफ़ी आगे तक चीज़ें जा सकती हैं और जिससे हम आगे वाले आने वाले चीज़ों में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। It's an amazing, auspicious day, and I'm at my alma mater right now. And VidyaAI, the team that I've been leading and like I've been advising for very long, finally we launched our product today, and it's a like very proud feeling for me that I'm launching the product in my own second home again, and it was an amazing feeling. So the VidyaAI, the right now is live on every platform, web app, mobile app, and anyone can go log in, student, teacher, and they can facilitate the services that we are providing in learning management. And I hope in the next 5 to 10 years, there won't be any other social media app on the student's phone. There will be only VidyaAI for sure. Across the continent, all over world, because we realize that India holds more knowledge. That time it was broadcast and digitalization and other areas. And today I'm happy to hear from Sanjay, over 350 people are located in 20 countries, and with the AI will be a tool for him to promote knowledge among those countries, not just in India, in the grassroots of India, because there is very serious lack of abilities and knowledge. But I will also say that Indian knowledge is more valued across the world. Like we have been tutored by few countries like America and England, but now India's time has come. Now India should tutor the whole global south, which is our new area where we can play a big role. Thank you. Thank you. You see how the world changes from analog to digital, digital to meta, from meta to AI. I'm Subhashish Mazumdar. I have been in the industry of digital world for last 25 years plus. I am a postgraduate from IIM Ahmedabad and also work with Hinduja Group, Tata Group, and now very much involved in this present VidyaAI ventures and along with the Media Group ventures. I'm also well linked to the education industry for mentoring. So the today's AI situation is such that it has to be a supplement for both students and trainers, whether it's in an education platform or whether it's in a corporate platform. The Vidya AI is such a unique product which has come up with the bearers of the Index AI, with Mr. Sanjay and Dr. Utpal and the full team. It can do wonders because it gives a complete customization of the way we would like to see a session of a practical movement in a class, similarly in a corporate, what it can generate for the professors, what it can generate for the students, similarly what it can generate for the trainers, then how you can archive, how you can keep a meta type. So those are the important features today, how to customize. People know that AI is all over the place today, but to ensure that AI's acceptance and usage is complemented by the customization is more important.
because you have AIs right from the simple chat GPTs from the areas of the meta, but we have to see and evolve, and that is why the brilliant things we have done and the group is done, and we invite the entire education groups across this country, and we are going global as well, where we can see how strongly Vidya AI is products, and we have a couple of more other products which can be used as a AI based for the meetings for ultimate the Vidya AI. That will be very useful. So wish everybody a big success, and we believe this has a long way to go as we start the complete and movement. Our government, I was recently there in Utkarsh, Odisha, where I heard PM Modi from a very close quarters, and the three words he said was edutech, AI, and the requirement of audio videos requirement across. So it becomes so much that at the topmost level of this country we are talking of that, and that gives enlightenment and delight to all of us to move in that direction with motivations. Thanks. Nadi Kapoor, I'm a first year computer science student. Namaste. Radhe Radhe, I'm Anadi Kapoor. I'm a first year student at Computer Science Engineering. ई समिट एक समिट होता है जहाँ पे सब तरीके के लोग आते हैं. आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों से मिल सकते हैं, आप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करके उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं. अभी हम विद्या एआई का स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है, हम वहाँ पर आए हुए हैं. विद्या एआई बेसिकली क्या करता है ना, बहुत पर्सनलाइज वे पे आपको पढ़ाई क्या पढ़ना है, आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो आपको करके देता है. आपने क्लास में देख लिया, पढ़ लिया क्या टीचर ने डिलीवर करा है, बट उसके आगे जो आपकी जर्नी होगी, आपको क्या क्वेश्चंस लगाने, आपको कैसे आगे फॉरवर्ड बढ़ना है उस चैप्टर को लेके, विद्या उसी को सॉर्ट करता है पर्सनलाइज वे में एआई के थ्रू एलएलएम मॉडल्स पे. तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इससे हम काफ़ी सारे बच्चों को स्टूडेंट्स की लाइफ में इम्पैक्ट ला पाएंगे. उनकी जो लर्निंग होगी वो और स्ट्रक्चर्ड हो पाएगी और टारगेट हो पाएगी. इससे प्रॉफिट क्या होगा ना कि हमारा टाइम भी बचेगा, प्लस हमें पता होगा हमें क्या पढ़ना है, और ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्री की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा. Dev, and I'm an economist, a researcher, and I have also authored the official biography of Muhammad Rafi, the Muhammad Rafi, Golden Voice of the Silver Screen. And my next book would be a book on acid attack survivors, which is on the anvil. It's nice meeting you all, and I really support AI as a movement. And today, AI is not anymore an artificial intelligence, but it has become a part of the real intelligence. And it would be very right to say that AI has become a part of everyday life. It is no longer like a spatial division which comes in as an artificial source. It helps in multifarious ways, be it research, be it education, be it gaming, be it media. I think the use of artificial intelligence has become absolutely indispensable. And going forward, I think the way AI is going, that is going to be the future. It is in the present, and the future will see more products of AI. And education really needs it because it helps in researches. It also helps in supporting the researches with information. The world is becoming a huge tank of information. So even as search engines, as deep tech, we need AI. So, what human brain cannot do, sometimes AI is needed. Of course, again, I would not take away the credit that AI is also built by human brains, and therefore human brains are indispensable. So, AI is coming in not to disrupt our lives, but it is coming in to support us. It has come in and made life much better, and it is also going ahead to make it even more better. And that's what we expect from AI. इस तरह के समिट होने से क्या फायदा होता है स्टूडेंट को और टीचर्स को और समिट होने से? This type of submits are very, very important because sometimes there are many products and we just don't know what those products are. So it builds up awareness. It also tells us where AI is going, what will be its future, and it encourages the students to come forward and participate. Our youth are very intelligent, they are innovative, and I hope that many of them will become entrepreneurs and will take up AI as their core to be an entrepreneur developing AI tools.
So that is how it is also important. And such summits is a platform not only for education and awareness, but also to bridge between the entrepreneurs, the aspiring students, and the VCs and the technocrats, and also an opportunity for marketing them and taking it much beyond the borders of India. So I think it is very important to have such summits and should not be limited only to India, but there should be, I think, program exchanges with international universities as well. As our Prime Minister has said, Mr. Modi, who has a very good vision. He is a futuristic person. He wants India to be the hub of AI, and he wants AI to go from India to the rest of the world. And therefore, I think the students play an important part, and so also the whole team of Dr. Utpal Chakraborty, who's taken it up as a mission, and of course his whole team. So I wish them good luck, and I'm sure that they will achieve what they're trying to do. It's a very, very benevolent approach towards developing a new technology that has come in. I won't say it is new because it has always been there. We are only improving on it every day, adding up layers and layers and layers. And I hope that we will have an Indian meta someday. So that's what I think I would look forward to. Thank you, ma'am. Thank you. आई एम रोहित शर्मा, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन नियर बाई टेक्नोलॉजीज। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा और ज्ञान सर्वत्र बिखरा पड़ा है, सब जगह उपलब्ध है, पर उसको एक जगह समेट के लाना और उसको जो चाहने वाले हैं, उसके जो विद्यार्थी हैं, जो उनके लिए एक जगह पे अवेलेबल कराना, ये एक बहुत बड़ी मेहमूद टास्क है। बहुत बड़े एफर्ट्स लगेंगे इसके लिए। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्रांति पिछले कुछ वर्षों में लेकर आ रहा है, और उसके जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उसके द्वारा इस तरह का जो ज्ञान सब जगह बिखरा पड़ा है, उसको एक जगह लाना और उसको एक जगह एकत्रित करके और सारे विद्यार्थियों में जो उसके इच्छुक हैं, जो उसके लिए उत्साहित हैं, उनके लिए उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी टास्क थी, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी उपलब्ध कराने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत बड़े बड़े सर्वर लगाकर और लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स लगाकर इतनी बड़ी टास्क को बड़ी आसानी से सारे ज्ञान को एक जगह उपलब्ध कराया जा सकता है, और उसको इवन हर विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इंडिविजुअलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि विद्या एआई के लॉन्च के साथ भारत में और तमाम विश्व में जो भी विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए उत्साहित हैं, इच्छुक हैं, वो विद्या एआई का यूज करके एक ही जगह पर सारा कंटेंट अपनी इंडिविजुअल आवश्यकता के अनुसार एक जगह ही उपलब्ध कर सकते हैं और उसका वांछित फायदा अपने जीवन में, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। तो यही मेरा इस समय निवेदन। Hi everyone, I am Vikram Pandya. I am Director of FinTech Program at SPJ, and I head research at Varanium NextGen. So as we all know, right, so typically what happens is that in general, classroom education is what everyone seeks. But after that, typically it becomes very difficult for people to learn in a customized manner and adaptive manner, and that's where the software like VidyaAI comes into picture. Adaptive learning is going to be the future because AI can personalize the learning for the student. Student can learn based on the style that they prefer, whether it is visual learning style or audio learning style. It depends on how they prefer it. And based on that, whenever we look at the overall learning journey, so people who understand certain things slowly can go at their own pace, and people who can be fast learner can quickly catch up and go ahead with the advanced learning concepts. And this is going to change the way people look at the education in future. We have in 2030, for example, by that we will have people with the personalized tutor for everyone, and with audio visual and with the content that we have today, right? That contextualizing the content is going to be very critical, and that is where I believe VidyaAI can really shine. The AI से नई क्रांति आएगी एजुकेशन को फिर तो। Yes, that's what I'm saying. Because what happens is that specifically in education, when we look at it, so far we are learning from books, we are learning, let's say, online, but the content is everywhere. But how to contextualize that content, how to make sure that the content is something which you can consume whenever you want it and at the right place and right time. That is where the AI will bring the revolution. Okay. This is Professor Ujjwal Kumar Chaudhary.
I've been an educator all along and setting up a new institute now in Bombay. I've been former Dean of Symbiosis, Amity, Washington University's Vice President and all that. Today I'm here for the launch of VidyaAI. I'm very happy that while artificial intelligence is taking the world by the horns, an Indian firm, along with incubation support here at IIT, is coming up with VidyaAI. If it leads to personalization of education for the urban children and increasing the access to education of the rural children, it will really serve the purpose. COVID has shown that 75% of 28 crores of Indian students had gone out of education virtually for almost 2 years. So this sort of revolution is necessary where integration of digital and the artificial intelligence makes education of high quality, personalized and accessible and alongside even cheap, manageable within the reach of the common child, of the common family. Looking forward to the launch here. Thank you. My name is Vipul. I'm 32 years IT thought leadership in and operating in India almost 3 decades and coming from Microsoft, IBM and currently president and CTO for MB Software, and I'm very excited for the Vita AI launch. I believe AI is a game changer that everybody knows, as you know, because the kind of excitement, especially with the introduction of ChatGPT in the international market, it's every segment, across industry, everybody will be the beneficial. Be it healthcare, be it education, be it financial sector, because this is the thing that I believe we are thinking about our everyday day-to-day life, and this can help us to enhance our productivity, enhance our delivery capabilities, whatever the segment you talk about. Whether you talk about healthcare, there are a lot of drug predictions, all these things are happening. You do not need doctor to visit the patient in the long distance. You can analyze the reasons of that particular thing, and then he can prescribe, or it can be automatically provide the advisory. If you talk about the automotive industry, you think about the autonomous car. If you think about manufacturing industry, it's a automation that helps the plant life cycle management. It helps the predictive maintenance with respect to before I can cut down my downtime, and if you can predict something, so we can mitigate a severe loss. Okay, so this kind of this. If you talk about the retail industry, if you see the retail, if I can provide a customer personalized, buying pattern, that will help the customer in a lesser time to get the content. Similar for education, your Vidya AI is a live example. It helps the student for the kind of need, and it can do the gap analysis, it can do the SWOT analysis as per the student, it can provide them the adaptive learning experience. Similarly, grading capabilities. Similarly, I can do a summary of the entire my content so that it can help me. So obviously, if you see the across the board, whether it's a industrialist, whether it's a consumer, everybody is beneficial for this new era of AI. Talk about the opportunity point of view. We have seen that lots of hyperscalers like Microsoft, AWS, Google, everybody is coming up in big way, and the kind of investment they are actually doing it, not less. And it is not restricted like earlier we used to see that it is restricted for North America. It is not like that. It's a common man's perfect. Okay, and the market size is almost, we are heading for next 5 years maybe 1.8 trillion dollars. Okay, and if you talk about the every industry wise, every industry will be beneficial. It's a 50 to 60 billion. Every industry is actually having the potential to grow. So hence, I believe from the industry point of view, as an individual point of view, everybody will be beneficial.
your name and how it is different from other products. Hi, myself Shubham Tiwari. So basically, Look center, look camera. yeah. So basically, what we are building, we are solving two kind of problems. The first problem is that what happens in a classroom, if a student is studying, they are more focused on writing the notes, but they are not very much keen on what lecturer is speaking. So our target is to solve that problem by providing the lecture content in their phones, in their laptop. The second problem is that कभी जनरली ये होता है ना कि ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, सो इफ यू आर कैप्चरिंग ईच एंड एवरी लेक्चर वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स. तो क्या होता है कि बच्चों का जो ये गैप था वो भी हमारा फुलफिल हो रहा है. तो थ्रू विद्या एआई वी वांट कि हर हर बच्चे को वो कंटेंट मिले जो कि उनको आगे बढ़ने में मदद करे. सो दिस इज ऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट विद्या एआई. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रहा हूँ. 25 साल तक भारतीय और विदेशी कंपनियों को लीड किया है, एक्स्टैब्लिश किया है इंडिया में. और पिछले 4 सालों से मैं शक्ति लिखा वेंचर्स भी चला रहा हूँ, जिसमें मैं स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ. जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. इस वक्त जो हम फोरम में हैं आज, ई समिट 2025 इन IIT बॉम्बे, ये फोरम में एआई का जो सबसे सब्जेक्ट है, डिस्रप्टिव, पूरे वर्ल्ड को डिस्रप्ट कर रहा है इस वक्त. तो एआई, अगर आप देखें, एआई की शुरुआत हुई थी जनरेटिव एआई से, अभी एजेंटिक एआई में आ गए हैं, और फ्यूचर में फ्यूचर एआई आ रहा है, विच इज सब कुछ वो ऑटोनॉमस की तरफ लेके जाएगा. तो इस दिशा में विद्या एआई को हम समझने आए कि विद्या एआई कैसे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करेगा. क्योंकि मेरा एनईपी पॉलिसी बनते वक्त काफ़ी बड़ा योगदान रहा है भारत सरकार के साथ. मैंने काफ़ी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में रहा हूँ, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन में रहा हूँ. इसलिए आज मैं सुनने और समझने भी आया हूँ कि विद्या एआई कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेगा. और हम सब जानते हैं, जिस वक्त ये बात हो रही है कि एआई में डिस्क्रप्शन हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं. आपको अमेरिका का पता चला होगा, 4 दिन पहले क्या हालत हो गई ओपन एआई की और एनवीडिया की, छोटे से बदलाव से, डीप सी के, चाइना के इम्पैक्ट से. तो हम भी सुनने के लिए आए हैं कि विद्या एआई इस तरह का कुछ एजुकेशन में बदलाव लाएगा. मैं अपग्रेड के साथ भी एसोसिएटेड रहा हूँ, जो एजुकेशन में आज भारतीय यूनिकॉर्न है. So that is my role, which is what Shaktilika Ventures does, supports build Indian global brands. तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं. अब मेरी तो आशा ये है कि विद्या एआई ऐसा टूल बन जाए कि बाहर पलायन की जगह हम अपने बच्चों को यहीं सिखा सकें और वर्ल्ड की बेस्ट शिक्षा दे सकें, जो भारत सरकार की भी एम्बिशन रही है. नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस रिवाइव किया जाए, तो उस तरह के स्वरूप में आए. अब आगे जब लॉन्च होगा तो हमको पता चलेगा. हम सब वेट कर रहे हैं विद्या एआई के लॉन्च के लिए. थैंक यू वेरी मच. Myself, Dr. Mayur Dubey. I am a director at the Rahul Education. We are having a 57+ institution and catering the 70,000 students in India. So that is my one specific mission in India, to just create a startup and entrepreneurship ecosystem in India, onto the same mission what the government is supposed to propose under the Atal Innovation Mission. As we are gathered here to just one of the launch into the artificial intelligence. So currently in this scenario, I will like to attract the attention that this is one of the initiative by the government and also by the government support where the AI companies are rolling out. Because in Indian education system, where the world is having a gross enrollment ratio around the 55% in the USA, and India is by having a lot of support till 28%, they are getting a 27 to 28%. Still, we are lagging from 73%. There is no students are going to the universities, and out of the 28%, if you can see how many are taking covering their degree courses. So then again, it will be fall down to till to 10%. Only 10% is students who are taking at UG courses and going to the PG courses. So artificial intelligence is one of the pillar who are creating a